And my name is Shweta, and I thank you all for coming. It's a series that we've started two months back, and this is the third episode. And the format is wherein we have a 2 hours discussion on a relevant topic around agricultural policies and rural issues. And today we joined together to also mark the release of one of our discussion papers on agricultural commodity trading bans. And we are joined by Mr. Siraj Hussain and Mr. Pravesh Sharma. And before I start, I would want us to just maybe open up and release the report and have both the authors join me here, please. It is absolutely wonderful of some farmers to also join us here today, and we're waiting for them to join. So therefore, I think we can speak in Hindi and English, and that's how it is. So aaj ke din, and we were tracking agricultural commodities being traded on futures, and we realized कि half decade हो गया, बहुत सारी हमारी important agricultural commodities की trading को ban हुए. 5 साल तकरीबन हो गए हमारे मेजर एग्रीकल्चर कमोडिटी बैन हुए. ऑफ कोर्स हम लोगों को ये उम्मीद रहती है कि जब भी प्राइसेस बढ़ेंगे सो कहीं ना कहीं when the government is under the pressure to respond, so one of the quickest way to respond has been to ban the futures market. आइडिया ये रहता है कि हमारे पास शायद फ्यूचर्स मार्केट में स्पेकुलेशन ज्यादा होती है, शायद फार्मर उस पे पार्टिसिपेट नहीं करता है, स्टेक होल्डर्स एक स्पेसिफिक तरह से होते हैं. तो इस तरीके से सोचा जाता है कि दैट इफ वी बैन commodity trading, the volatility in prices will go down. This study that we're presenting today just looks at it analytically. कोई judgments नहीं है, absolute data है prices का, जिसको analyze करके हमने ये दिखाने की कोशिश करी है कि जब बैन लगते हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है प्राइसेस पे, फार्मर्स को क्या फर्क पड़ता है. और हमें खुशी है कि आज हमारे बीच में वो एफपीओ मेंबर्स हैं जिन्होंने शायद खुद ट्रेडिंग करी है फ्यूचर्स पे, एंड उनका भी हम एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे. बट बिफोर दैट आई विल बी रिक्वेस्टिंग माय को-ऑथर श्रुति टू गिव यू अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन ऑन क्या हमारी फाइंडिंग्स रही हैं. सो तकरीबन 10 मिनट हम वो चीज लेंगे, एंड देन आई विल ओपन अप फॉर पैनल डिस्कशन टू बी मॉडरेटेड बाय सिराज सर. श्रुति. Thank you, Shweta ma'am, and thank you all for joining us today. I would like to take this opportunity to thank our CEO, Ms. Shweta Saini, who always gives us opportunity to learn and grow, and also the co-author of this report, Vansh Oberoi, who helped us into analyzing the data in this report. So thank you. In the next few slides, I will walk you through the evidences from soybean and chana market. So our starting point of this analysis was to understand why government exactly bans futures market in the very first place. So the idea of government is whenever price rise, there is a tendency that government reacts and they act. So the idea of the government is that whenever price rise, they act, and they act quickly. And the first policy tool they use is banning futures trading, agri-commodities futures trading. And the underlying
underlying assumption under this is that futures market are majorly dominated by speculators rather than by genuine hedgers, which are farmers and processors and so many others. Also, there is a belief among policymakers that futures market do not reach farmers. So banning it won't cause any harm to them. Even if the impact of such intervention is very less or limited, such interventions may still manage inflation expectations. So we tested whether this logic holds using evidences from soya complex and chana. So India approaches to futures ban appears almost like a pendulum. Commodities move in and out of the suspensions repeatedly over time. If you look at this slide, so many commodities like chana and soya oil are banned since 2000 and get suspended multiple times since 2008. However, some commodities like rice, tur, urad are in suspension since 19 years and still in force. Most recently, in the year 2021, government suspended 7 major commodities, including soybean and chana, which are still in force. So in the next few slides, I will show you some evidences separately from soybean and chana on how soybean and chana get influenced by fundamental factors. Because futures market are a mechanism for price discovery. They do not determine prices, fundamentals do. And the most important fundamental factor is crop balance sheet. By crop balance sheet, I mean supply and demand situation. In supply, we include opening stock of that crop, production of that crop, and export situation of that commodity. However, in demand, we include consumption of that commodity. If it is an imported commodity, then how is the import situation behaving? And the stock level, or we can say ending stock of that commodity. In commodity like gram or chana, substitute commodity yellow pea imports and policy regulations play a very important role. However, in commodity like soya complex, crude palm oil and sunflower oil imports and other import regulations and policy interventions play a very important role. And also energy policies are playing very important role in the last few years in commodity like soya complex. Now, if you see this slide, soybean is more a meal crop rather than an oil crop. And when we are saying this, if we produce 1 ton of soybean, we get around 800 kgs of soya meal and around 180 liters of soya oil. And if you see the graph, right-hand side graph of this slide, meal production, if we produce around 12 mmts of soybean, we get 8.5 mmts of meal, in which 18% get exported and remaining 83% we consume through that goes into feed sector and adding closing stock as well. However, when we talk about soya oil, we consume 6.1 mmts of soya oil annually, in which 70% we import. So soya oil is more an imported commodity, so its global dependency is higher. However, soya meal is a domestic commodity. So domestic supply, feed demand, these all play a major role in soya meal. So in this slide, we can see that there is a inverse relation between soya wholesale price index inflation rate and domestic supply. Whenever supply increases, you can see there is a fall in inflation rate, annual inflation rate. In the right graph of this slide, you can see whenever there is a decline in arrivals, we can see that prices are increasing. Similarly, in this graph, which is soya meal price scenario, wholesale price scenario, you can see that prices are behaving with respect to the supply situation. Of course, rise in supply, lower prices we can see. However, soya oil
behaves very differently when we see it as compared to soya meal, because of course, as I mentioned, soya oil is an imported commodity. So futures, as you can see in left graph, there are two things. One, blue line is the global SBO prices, and gray, orange and gray line is the pre-ban and post-ban price comparison of retail price of soya oil and futures trading volume. So you can see that there is no impact of traded volume, futures traded volume on prices. They behave in this global scenario act as a leading indicator for domestic soya oil. So we can say that global factors play a major role in deciding or driving the prices of soya oil. So when we were working with Ministry of Agriculture, we did this analysis and we found that there is an inverse relationship between the stock level of last year and the... Hello, sir, good evening. There is an inverse relationship between the stock level of last year and the upcoming inflation rate. So whenever there is lower stock levels, we can see that inflation is increasing. So this analysis is from 2016-17 to 24-25 when we were working with ministry. Now, when we say gram prices, gram behaves differently as compared to soya complex. So gram has imported pulses that also play a very important role, and then domestic production. The lower production will impact the prices of gram in India. And hence, this is the supply and price situation. Lower supply will increase the price. And also you can see there is a cyclicality in this graph. Every year between Feb and March during harvesting season, you can see there is a decline in prices because arrivals are increasing in the mandis. So during this analysis, we were talking to some of the farmers from Madhya Pradesh and Maharashtra who were the farmers of soyabean and chana. तो हमने उनसे पूछा था कि आप जब ट्रेड कर रहे थे तो इम्पैक्ट कैसा था, आपको क्या हेल्प हो रही थी. तो उन्होंने हमें सोयाबीन का ही एग्जांपल दिया था कि उस टाइम पे सोयाबीन के प्राइसेस हमें लगते थे कि लोअर जा रहे हैं तो हम वेयर हाउस में स्टोर कर सकते थे या फिर हम देख सकते थे कि कल का भाव कैसा रह रहा है. बट अब हमारे पास वो इंफॉर्मेशन टूल नहीं है, अब हम नहीं देख पाते, हमें सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू या मीडिया में जो चल रहा है उसके थ्रू ही पता लग पाता है कि प्राइस सिचुएशन कैसी रहेगी. तो सिमिलरली चना वाले फार्मर्स का भी यही इनपुट था इस दौरान. So with all this analysis, our key findings were that bans do not reduce volatility. Even in some cases, it may increase it. As we see in chana, even after suspension in the year 2021, prices were increasing. Similarly, bans weaken price discovery and remove hedging tools. There is no decision-making power or decision-making tool for farmers, or we can say for FPOs. And also, as I say, bans do not reduce inflation. Fundamental factors are the one that influence domestic agri-commodity prices in India. So yeah, that's all from my end. Thank you. Thank you, Shruti. So clearly, ये इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट भी समझती है कि एक फार्मर को बिफोर सोइंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन प्राइसेस इम्पोर्टेंट है. इसकी एक बिगेस्ट टेस्टिमनी ये है कि MSP ऑफ द क्रॉप्स गेट डिक्लेयर्ड इवन बिफोर द सोइंग हैपेंस. सो एवरीबॉडी नीड्स that information and that visibility. So the key question before I hand over to Sirat sir basically is, and because both of them have been at the government, exactly what is it that drives the behavior of the government towards banning commodities, and if it continues to stay out from the market for the past 5 years, वो क्या ही होए market में कि ये bans को वो revisit कर पाए. Moreover, sir, over to you. Thank you. Thank you, Shweta. So दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया. इतनी गर्मी में आप लोग जहां से भी आ रहे हैं तो काफी आपने हिम्मत दिखाई, और मैं खास तौर से संजय कौल का शुक्रिया अदा करता हूँ. वो गुड़गांव से आए हैं
मुझे लगता है कि बॉम्बे से आना आसान है और गुड़गांव से आना काफी मुश्किल है। एक और खास बात यह है कि जब ये बैन लग रहा था 2007 में, तो संजय कौल वहां मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी थे, और बैन लगाने का जो प्रपोजल कंज्यूमर अफेयर से आया होगा तो इन्होंने उस पर जरूर अपने कमेंट्स दिए होंगे। तो आज थोड़ी देर बाद हम आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और इनके बाद मैं जॉइंट सेक्रेटरी था, तो कई चीजों पे जब बैन लगा और बैन हटाने की कोशिशें की, तो हम लोग उसके आई विटनेस रहे हैं। और ये मैं कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि गवर्नमेंट में बैन लगाना आसान होता है, मगर उसको उठाने में बहुत दिक्कत होती है। ये हमारा पिछले 15-20 साल का तजर्बा है मुख्तलिफ कमोडिटीज में। एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ सोयाबीन के किसान हैं, और सोयाबीन सबसे अच्छी मिसाल है कि फ्यूचर प्राइसेस से क्या हो सकता है। आप देखिए कि जब 2025 के अक्टूबर में सोयाबीन की फसल काटी जा रही थी, तो मेरे दोस्त जो मध्य प्रदेश में है वो बताते थे कि 4,000 रुपए क्विंटल भी मुश्किल से मिल रहा था, और किसी को 4200 मिला, किसी को 4300 मिला, जबकि पिछले साल 5,328 रुपए उसका एमएसपी होता था। असल में एमएसपी अब ये इतने फिगर्स में इस तरह आने लगा कि गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम 50% देंगे कॉस्ट का, तो इसलिए ये फिगर ऐसी आने लगी 5,328, वरना पहले ऐसा नहीं होता था। फिगर 5,500 या 5,000 उस तरह से आती थी। अब ये एक बहरहाल मुश्किल थी, तो 4,000 रुपए में हो रहा था। और मैंने कल बात की अपने दोस्त से मध्य प्रदेश में, तो अब 8,000 है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे प्रवेश शर्मा से, और रास्ते साहब भी आ गए एनसीडीएक्स के एमडी, कि क्या अगर फ्यूचर ट्रेडिंग जारी होती तो क्या पिछले साल के अक्टूबर में ये प्राइस, ये फोरकास्ट हो जाती कि अब 8,000 हो जाएगा, या वो भी नहीं कर पाता। बहरहाल गवर्नमेंट के सामने मुश्किलें हैं। वो इन्फ्लेशन से, बहुत कम चीजों से सरकार डरती है, लेकिन इन्फ्लेशन से ज्यादा डरती है, और उसकी वजह से बैन जो लगते हैं वो हट नहीं पाते हैं। कई स्टडीज पिछले 2-3 साल में हुई हैं। आप देखिए कि बिमटेक की स्टडी प्रवीणा रजाब ने की, आईआईटी खड़गपुर में थी वो पहले, अब तो बिमटेक में है। इसके बाद आईआईटी बॉम्बे ने स्टडी करी, इसके बाद इरमा ने स्टडी करी, और अब ये स्टडी हमारे सामने। सारी स्टडीज ये बताती हैं कि फ्यूचर मार्केट से हम नहीं कह सकते कि उसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, लेकिन बहरहाल शायद सरकार उससे मुत्तफिक नहीं है इन स्टडीज से। तो हम ये रिकमेंड करेंगे संजय कौल साहब अभी जब बोलेंगे तो उनसे भी कोशिश करेंगे कि वो भी सरकार को ये लिख के लिए लिखें अपने आर्टिकल में या अपने ट्वीट में, जैसे भी चाहें, कि वो अगर इस फाइंडिंग से इत्तेफाक नहीं करते हैं कि इसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, तो वो कोई स्टडी कराएं जिससे कि लोगों के सामने ये बात आए। क्योंकि अब इतने सालों से ये बैन चल रहे हैं कि हमारे एक्सचेंज जो एनसीडीएक्स में ज्यादातर एग्रीकल्चर ट्रेडिंग होती है, तो वो तो बहुत ही कम वॉल्यूम है, और उसी की वजह से अब देखिए कि एनसीडीएक्स को इक्विटी में जाना पड़ रहा है। तो ये बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन मैं कहना चाहूंगा, और अब प्रवेश बताएंगे कि एफपीओ से क्या तजर्बा रहा है, और किस तरीके से हम ये उम्मीद करें कि सरकार इन बैन को हटाएगी। एक बात और कहना चाहूंगा कि इन थ्योरी सरकार का रोल नहीं है, इन थ्योरी ये पावर सेबी के पास है। लेकिन जैसा कि हम पेट्रोल प्राइसेस में भी देख रहे हैं, आप देखिए कि पेट्रोल प्राइसेस डीरेगुलेट हो चुके हैं। अगर आप उसकी पीआईबी की प्रेस रिलीज देखें तो गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। पेट्रोल के प्राइसेस को बढ़ाने या घटाने का डिसीजन पेट्रोल और डीजल की कंपनीज ले सकती हैं, लेकिन जाहिर है कि वो डिपेंड करता है कि इलेक्शन साइकिल कब है, वगैरह वगैरह। ओवर टू यू प्रवेश। Try to be less than that. So thank you for inviting me to this, and I completely endorse, and of course appreciate the fact that you put it in such a, nicely researched, documented, based on data. But if you permit me, while the what has happened is important, and of course it's before us, I'm always curious to try and understand the why of it. अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमारे मित्र लोग अवंतिका एफपीसी के यहाँ पर हैं, ये जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है,
आपने एक्सप्लेन किया है कि वो क्यों हो रहा है, लेकिन ये क्यों हुआ है ये भी जानना बहुत जरूरी है. So I'm, with your permission, sir and madam, going to go a little beyond the scope of maybe the format, and I'll try and give you my understanding of the larger political economy which drives this whole what we can call the agriculture marketing context. Right? So this is part of the agriculture marketing framework or system. Now, one very interesting slide, if all of you noticed, had these, which Shruti put up, these history of bans going back from 2007 to 21. And I think you can see part of the clue in that slide of the why. So if there is one absolutely rock hard political consensus in this country, it is the political economy of agriculture. In a country where we can get into a fist fight over whether Rasagullas originated in Odisha or in West Bengal, there is absolute political consensus on how agriculture is to be handled. And the evidence is, you have presented the evidence. So I could say that from 1991, which is supposed to be the great watershed year, though there was life before that. But okay, let's take 1991 as that great watershed year when the so-called reform process in India began. You can see that so many political formations have ruled at the center and in the states. Even in the center, it's not just been the two major political formations. There was also a united front, right, and combinations thereof. There is not an iota of difference in the approach towards agriculture, specifically agriculture marketing. And I'll pick up three aspects of that. We can't go into a very detailed discussion here. There are three objectives, and with apologies, while I, as I said, admire and appreciate your effort in producing this, everything that you are saying in this report is known to every government since, time began. The government knows the role of imports, the role of the balance sheet, the role of whatever you have said. Of course, it is already known to everybody. These decisions are taken in spite of that, not because this information is not available to policymakers. So I, of course, have spent most of my working life in agriculture in the state in Madhya Pradesh, learning from people like Namkishore ji and his colleagues. And I can identify maybe a dozen, but today for this discussion, I'll only talk about the three big pillars of the agriculture marketing context, which are the drivers of all these policy outcomes. So, of course, no, I'm sure it's not going to be great rocket or great secret that I'm going to reveal. Number one, of course, is the whole objective of price suppression, because in the larger political economy model, the price of wage goods, we decided in the 50s itself that we have to keep in check, which is why export bans, which is why stock limits, which is why the EC Act. There is still an EC Act which talks about potatoes and onions. They're part of the EC Act. I didn't think that onion eating should be encouraged. If anything, it should be discouraged in certain moments, but it's part of the EC Act. Okay, maybe we can say sugar is an essential commodity, but onion certainly is debatable whether it's an essential commodity. But anyway, it's there. So I'm saying, number one is the objective of price suppression. Shweta was part of a team when she was at ICRIAR, along with OECD, which did a very long-term longitudinal study. It's available on the web. We should, if you're interested, see it, where it was calculated that on an average in the last 30 years, the price realized by the average Indian farmer is around 15% less than they would have realized in a free trading context. So effectively, farmers have been taxed at the rate of 15% for the last 30 years. And you can multiply whatever value that. But anyway, so price suppression is one of the objectives, and this is one of the small outcomes. The second big objective, of course, is, people call it the inbuilt urban bias
which affects agriculture, which is that urban consumers must not face price volatility. And whether it is, I would say, future trading is a very late victim of this. It starts with things like, the import policy or the export policy or the stock holding limit. These are ways that the government has used to try and keep prices in a very narrow band. And the third, which is normally not talked of very much, is what I call the role of rural commercial capital in this whole agriculture marketing scenario, right? So unlike, let's say, in the industries sector or the services sector, where institutional capital today is the bigger proportion or perhaps the largest component of capital which flows through these sectors, in agriculture, it is still rural commercial capital. This term, incidentally, as you would know, was coined by a Cambridge economist called Barbara Harris White, who studied the rice markets of Bengal for about 10 years. And she showed how the big landlords, the mandi traders, the SMEs in agriculture, they basically access institutional capital because of their assets, because of their stocks, and then they on-lend to farmers, to small traders. Even I'm sure our friends here informally will tell you at some point they must have borrowed from some of these agents. So these three pillars, the policy of price suppression, the policy to keep urban inflation, especially in food, in check, and thirdly, the role of rural commercial capital. This is what sets the agriculture marketing policy context. And you can now start, discussing any number of things: the lack of price discovery, transparency in the mandis, the way competition is kept out, the near monopsony or monopoly conditions in many mandis. आपके भी अभी भी क्षेत्र में ऐसी उप मंडी हैं जहां 5 व्यापारी हैं, 10 व्यापारी भी नहीं हैं, ठीक है ना, छोटी-छोटी मंडी में. So these are the ways in which we have used government policy to protect the traditional sources of capital, to have a near monopoly on channels of financing, channels of trading, channels of informal credit delivery, etc. And I'll now come back to your study. So my basic submission is that you cannot look at a sophisticated third-tier marketing solution like futures without looking at the larger context of where agriculture marketing or how agriculture marketing is being treated in this country. It's like saying that we can have a very dilapidated ground floor of a building, but have a very luxury kind of third floor. It's not possible. The primary markets are interlinked to tertiary markets or these solutions like futures. Till there is reform in the primary marketing network and the primary marketing framework, you will not be able to see thriving tertiary solutions like futures. So this is my basic thesis. I'm going to stop here. I'm happy to hear some thoughts and reactions. Okay, Pravesh, thank you. So Pravesh has given you an overview of the agriculture economy and how the expectations of reform should be tempered. So we have Tirtha Chatterjee, who is now with Jindal School. Earlier we were together in a career, and after that she joined the Center for Development Studies in Trivandrum. Hello, Tirtha. Hi, hello, Siraj sir. How are you? I'm audible, right? Yeah, you are audible. So we have also written a paper together. So Tirtha, over to you. Thank you. I would like to say hello to Pravesh sir also and Shweta also. I really wanted to come today. It's just that abhi I came back from the university and it would have taken another couple of hours for me to reach the venue. I will share my screen. Then I think small presentation. I will share my screen. Visible, right? And slides moving all right? All well, Tirtha. Thank you so much. Before I start, I want to congratulate Shweta
Shruti and Vansh for their paper. And what more can I say? You will see my presentation and it sort of absolutely aligns with what you said. Also, I'll try to talk in Hindi also, jitna ho sakega, so that people there, the audience is able to understand what I'm trying to say. So, pehle to food price inflation has always been, as Pravesh sir also rightly and Siraj sir also rightly said, food price has always been one of the key concerns, and correctly so. Food price farmers ko bhi affect karta hai, and the consumers and producers both, and therefore the overall economic welfare, economy ki jo welfare hai, since agriculture employs so much of our workforce, it is very correct that food price has to be one of the most critical aspects. But the issue is that always, whenever there is a food price issue, the derivative trade suspension has been, yeah, 1 second. Yeah. Derivative trade suspension has been one of the most frequent interventions. And the reason is what we just discussed right now is futures market speculative behavior को लाता है, and in case अगर हम suspend कर दे तो speculation भी बंद हो जाएगी, and therefore inflation भी control में आ जाएगा, prices will also be under control. But we'll see if that works, if that logic works or not. Futures price has been suspended. This slide, this sort of table is has been seen in many papers and reports right now. Ki there are commodities which 20 years tak bhi abhi almost suspended hai, and some like chana has faced so many suspensions over the last 10 years only. And several studies have cited, जैसे इस paper ने भी, Saini et al. Paper also, कि there is no relationship between futures trade suspension and price stability. तो literature क्या कहता है? What do the existing studies say? Existing studies ये कहता है कि futures price does not stabilize, destabilize spot prices. It says that futures contracts help in price leadership. People can actually look at futures prices as a price leader, and sort of spot prices can follow that track. Or जैसे you suspend it, the relationship sort of breaks. And both series using rigorous empirical techniques have been found to be highly co-integrated. Futures market is the leader. It sort of paves way for the spot market, but suspensions have had no role on price inflation. So in our case also, हमारे paper में भी with Nidhi Agarwal from IIM Udaipur and Karan Sehgal, we ask a very similar question. Does derivative trading suspension rein in food price inflation? That's the question. So the approach that we take to answer this question is slightly different. What we look at is, what if there was no suspension? अगर suspension नहीं होता, तो क्या चना का प्राइस जैसे आगे पीछे जा रहा था वैसा ही जाता क्या? क्योंकि अगर सस्पेंशन हुआ है तो अगर डिफरेंट होता तो ही इफेक्ट आएगा. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो वी स्टडी 3 एपिसोड्स. One is 2021 वाला चना का सस्पेंशन, 2016 चना सस्पेंशन, and 2021 mustard oil seed derivative का suspension. Why we study these 3 suspensions? Because both mustard seed derivative and chana, they had approximately a good share. They were very liquid markets, and before suspension 9.5% almost traded market share था before this suspension was announced. हाँ, जो मेथड हम यूज कर रहे हैं that is slightly newer. It is called synthetic control methodology. What it does, as I said, is it helps us to construct a counterfactual. I will explain how we construct the counterfactual in a while. There are 2 steps in that. पहला क्या होता है? For example, say chana, you have to identify what are the commodities which are similar to chana, for example. So right now, दिमाग में सबसे पहले what comes is other pulses, right? There are other dals which can be very similar or very close substitutes to that of chana, or at least closer substitute compared to say wheat or rice. So what we will do in this study, is that we look at the price which chana followed, right? And the price that this counterfactual that we create follow. Okay. If there is a similarity, or yeah, this is an important point to note, that the counterfactual that we create did not face any suspension.
है ना. सो इफ चना इज से प्राइस सीरीज ए, उसका एक ट्रेजेक्टरी होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा बेस्ड ऑन अंडरलाइंग कंडीशंस, और एक काउंटर फैक्चुअल या सिंथेटिक कंट्रोल हम क्रिएट करेंगे बेसिस वेरी सिमिलर कमोडिटीज, और हम देखेंगे उसकी प्राइस ट्रेजेक्टरी क्या जा रही है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस काउंटर फैक्चुअल अगर ये मिमिक करता है चना के ट्रेजेक्टरी को, then it means that futures market suspension really did not have any impact, क्योंकि ये काउंटर फैक्चुअल को तो कोई सस्पेंशन हुआ ही नहीं था. अगर से द सीरीज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, देन हम कह सकते हैं कि हाँ देखो चना में इस सस्पेंशन की वजह से ये डिफरेंस आया है. So as I said, there are two steps involved. One is you identify the control group or the counterfactual, and second is so हम सिर्फ चना का substitute को हम मसूर नहीं ले सकते, right? So there are so many pulses available. So what we do is we take a weighted combination. और weights कहाँ से हम compute करते हैं? Weights compute करते हैं basis underlying conditions. What is the market arrival? What is the import? What is the international price, global production? International becomes very important for oil, for example, mustard, because we've seen it follows a global price trajectory. So broadly, synthetic control is a weighted combination. As I said, donor pool है चना, चना के लिए बाकी सारे pulses हैं, mustard के लिए similarly बाकी सारे oil seeds हैं. हम सिर्फ वही use कर रहे हैं as control जिन पे suspension नहीं हुआ है, so that is not affected. My treatment group is chana or mustard, as the case may be, and my control group is something which is not been affected by the suspension. And for prices जो हम compare करेंगे मंडी prices, so agmark net से हमने मंडी prices collect की है, and for which we did not get मंडी prices, polled prices are also used, NCDEX के polled prices we use for the analysis. So as I said, this is something which I already discussed, that you just compare the trajectory of the two prices, एक treatment group, एक control group. Control group को कोई suspension नहीं हुआ है, और आप last वाला bullet if you notice, अगर suspension को कोई effect होना होता, then the trajectory of the two has to be very different. For example, if post suspension say price of chana suddenly falls, okay, that means that suspension ने शायद कुछ किया है, और synthetic control rises, it means that कि सस्पेंशन की वजह से चना का प्राइस कम हुआ है. अगर ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब है कि देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन द टू. दैट मीन्स व्हाट, जो इवेंट, जो इंटरवेंशन गवर्नमेंट ने किया था, दो सस्पेंशन गवर्नमेंट ने किया था, उसका कोई इफेक्ट था ही नहीं. सो दिस इज हाउ द टू, देयर इज अ थर्ड प्लॉट ऑल्सो, स्पेस की वजह से आई डिड नॉट पुट इट. सो ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड फिगर 2 इज, दिस इज फ्रॉम आवर पेपर. लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है, द ब्लैक लाइन इज द ऑब्जर्व्ड प्राइस, द पिंक लाइन इज द सिंथेटिक प्राइस. ये डार्कर जो प्लॉट बार है, दिस इज द डेट ऑफ द सस्पेंशन. What you have to notice is, so synthetic for chana is, as I said, all other pulses. Or this is for mustard, I'm sorry, right hand side is for chana. So ये जो difference आप देख रहे हो, आप पहले what you notice is, notice the two prices, the trajectory. ये भी ऊपर जा रही है, black one is also going up. Post suspension, ऐसा नहीं कि सिर्फ mustard is only coming down. The entire synthetic control which we created is also coming down. Now the difference between the two is because of a global oil production shock at that time. उस time पे Canada 2021 में they declared that there is a production shock of canola. इस वजह से there is a difference in the levels of prices between the my control treatment, which is mustard, and control, which is the set of all other oil seeds which we have used for an analysis. Similarly, you look at this right hand wala graph also. So right hand wala graph mein, when you see the dark line once again is your yeah, the right hand wala plot, the dark line is once again your the date of the suspension. If you notice, the pink line is the not suspended commodities, the average of not suspended, weighted average of not suspended commodities, which is our synthetic control which we have created, and the darker one is your price of chana. And you see, look at the trend, it is absolutely following the same trend. इसका मतलब ये जो event है, ये जो black वाली event है, both in this case and in this case, it really did not have any impact on price of either mustard or chana. It just shows that suspension बस हुआ on paper. It had no impact on the prices. जो objective था कि suspend करेंगे तो price कम हो जाएगी. That is not what has happened. Mustard continued to follow global oil prices. Chana also, basis our domestic and imports is what underlying conditions is what drove chana prices.
So this is, and as all in our empirical papers, we have to do a series of robustness tests. जो हमें मिला वो हमें बस फ्लूक की वजह से तो नहीं मिल गया. ऐसा तो नहीं कि because we chose our commodities in such a way that we got our results. So we have to keep doing several robustness checks in space होता है, in time. What do you mean by in time? मतलब हमने क्या किया कि we tweaked around the date of suspension also. कि 21 में नहीं हुआ. What if suspension happened in 2018? What if suspension happened in 2019? क्या कोई difference आता उससे दोनों की trajectory में? What we saw was no. Again हमारा if you realize इस graph में हम compare जिसके साथ कर रहे हैं, that becomes very important, the pink one, right? So what we did was हमने उससे भी play around किया कि हम एक दो control हटा देते हैं, दो तीन oil seed को add कर देते हैं. But the point is, once again we kept getting because of brevity of time and space, हम नहीं, I'm not showing those graphs here, but the point is that all the results point towards the same result or same finding, that price trend of suspended commodities followed very similar trend to that of other commodities in the group. Pulses were very similar to other pulses. Mustard oil was very similar to other oil and oil seeds. हमने इसके साथ साथ एसोसिएशन भी देखा, दूसरे प्लॉट्स भी देखे, ग्रेंजर कॉजालिटी भी देखा. But once again, that is what we saw, कि domestic oil price followed global trends. और उस time पे, if you remember, it was just after COVID, right? So supply chain भी बहुत सारा disrupted था. As I said, mustard का impact canola का भी था, उससे भी impact हुआ था. 2014-15 में तो pulses के बहुत supply कम हो गई थी. So that way, that was another reason why prices of chana went up at that time. So what our analysis and all the existing studies, including the paper which Shruti just discussed, that commodity prices are driven by their own underlying supply demand fundamentals. Futures market trade suspension does not do anything to the change in trade. Suspend करने से कोई prices की कुछ भी difference नहीं आ रही है. So what is some policy suggestions? Same as the discussion before my talk, and that is suspension does not affect prices. Suspension should be discouraged. Rather, on the other hand, futures market is it sort of is an efficient mode of price discovery, risk management. Farmers को support करता है, processors को support करता है, farmers value storage, marketing decision, all of that, and especially in times of high volatility. Like when times are going good, price volatility nahi hai, then it is all right. But we actually need price discovery and risk management more so when there is a period of high volatility. Further, no other country in the world suspends futures market. We've seen developed futures market, derivative market across the world, and none of those countries are not, they're not suspending trade anyway. Rather, focus should be on market development. Market का intelligence बढ़ाओ, surveillance बढ़ाओ कि speculation ना हो, farmer participation को और encourage करो, educate farmers and farmer producer organizations कि आप और futures market को use कर सके. So that is sort of should be the way ahead. Thank you. That would be all. Thank you. Thank you, Tirtha. Good that you presented your own findings. So now it's open house. So we can actually have the farmers also. हाँ साहब, आप कुछ कहना चाहें या पहले संजय को सुनेंगे? हाँ, जरूर सर. पहले संजय को सुन लीजिए, साहब नहीं लगाया था बैन. I have been out of this actively not part of the agri-business for some years, but just a few comments I'll make. One, the hypothesis that speculators are their presence in the futures market. Yes, of course. You cannot have a futures contract with a counterparty. So a hedger's counterparty is the speculator. So there is no such thing as lack of speculation. If there's lack of speculation, there will be no futures contract. So ये तो समझना ही है कि speculator के बिना तो contract ही नहीं आगे बढ़ेगा. सिर्फ buyer और seller नहीं हो सकता. So there has to be a buyer and seller. So there's a hedger and a speculator. These are the two parties. Second, I completely endorse what Pravesh is saying, that when you're looking at futures market, you have to look at the larger agri-market ecosystem. And the reform is not just in the futures trade, it's also in the MSP regime itself.
So wherever there is an active intervention of MSP, actually the futures market cannot thrive. So you have to choose whether you want an open market system or you want a regulated system. Now, if you are looking at a regulated system, then there's no role for the futures market in any case. For instance, in wheat, the little trading that took place was in Sharbati or not the regular standard wheat, because the government itself is the biggest player. तो फिर वो traders के लिए तो कोई scope ही नहीं है. तो सर फिर तो बिल्कुल बैन नहीं होना चाहिए. बिल्कुल नहीं करना था. In fact, जैसे rice, normal rice which is procured in MSP, there is Mr. Raste will never get any liquidity. He might get liquidity in some narrow varieties of Sona or some narrow varieties of Basmati. So I think it's important that you started this conversation, because otherwise this whole conversation around the futures market itself is dying down. And then Mr. Raste is perhaps an isolated person. पहले तो कम से कम बातचीत तो चलती थी. Now, in the futures market, if there's limited participation, yes, it could lead to excessive speculation. And there was a time when, in Goa, for instance, there were a handful of people who could exploit the situation. So you require liquid contracts, you require large, wide participation, not just of farmers, because farmers will, at least in the Indian context, not be able to trade because the minimum size is too small. But farmers can use that as a price discovery. So to expect that farmers will be active users of futures markets. I mean, we also have to hear them. Yeah. They're not farmers. They're FPOs. Absolutely. And FPOs, when they are taking on the role as traders, if they are just farmer aggregators, again they will not be playing a role. So to think that farmers should become participants actively in the futures market is not. It's not. See, in South Africa you have 1,000-acre farms. Here you have an average size of 5 acres. कहाँ वो कम से कम आपको 100 टन 50 टन तो उसके पास होना चाहिए ना to trade, and he's not a trader. The role of a farmer is to go by either the MSP or the spot markets and use that as price discovery to decide whether he should store or sell it to an Arthia, but he can't be an active participant. In any case, that's a different set of issues. The only other thing which Pravesh right now correctly pointed out, that the government of the day has to decide what kind of balance they require between farm gate prices and consumer prices. Now, if you want to open up the market, the resistance is coming from the urban consumer. Resistance is not coming from the farmers. So, in one place, you can't say, I want to champion the farmer's case and not allow him a good price. For instance, this year the monsoon is likely to be weak. A futures market could show that prices would be little higher. Like the West Asia crisis is showing that the futures price will be high. And that is why all governments are trying to capture whatever oil they can get today, because they're expecting tomorrow it will be $140. So आज $120 में भी खरीदेंगे. So that is what. So spot market decisions are going to be based on a future kind of scenario. The only final point is there has always been an academic debate whether spot influences futures or the other way around. And there is truth in both. Both influence. So futures could create short-term volatility, but over a long term or a medium term, it will balance out. The balance sheet, as was pointed out by your studies, will sort themselves out. But short term, certainly, there could be excessive speculation. There could be some kind of understatement of what the spot market is. So these are generic kind of comments I made because I am not really an active participant in what is happening. And just one line. We used to have something called the planning commission, which actually used to make projections. And as a very minor cog in the wheel, I was associated till the last 13th plan after which we gave up planning. I would always ask one question of the very eminent people when planning. What is an acceptable food inflation rate for India? There has never been.
nobody is willing to say, should it 5% or 7% or 3%? Nobody is willing to make the air nub of the issue. What is, as a country, we are willing to accept the rate of inflation for agricultural commodities, which rewards the producer, but also protects the vulnerable among the consumers. No question that the vulnerable have to be protected. But do 140 crore people need protection? That's it. I mean, one thing as a researcher I find very encouraging when both of you spoke was there is an acknowledgement that bans will not reduce prices or will not make much difference, but we still want to ban it because there is an urban bias. There is a bias on prices being high, on inflation being high. So it just tells me, maybe as a researcher, that the price of non-action is really, really very high, and therefore any action, and that could just be banning, also creates an optics. But I'm sure, and I completely concur, that there is speculation, and there should be speculation. So is in the stock market. But sir, if we banned, we can never get that depth, because you yourself highlighted that unless there was depth of participation, the prices would not be dynamic and reflective of real things. But sir, if we keep banning, and we've been tracking commodities for some years now, every 3.5 to 4 years, there will be a drought. There will be rain deficit, and every drought year, El Nino year, would see prices, would see export bans of sugar, would see bans of other commodities and prices going up. But if we were to keep banning it up, we can never create a confidence even in the stakeholders to want to go back to a system that gives you some signal of where the prices are going. And so just today we were talking to a few people and they were saying, future bhav kahan ja raha hai, kaun si crops ugengi, kaun si kahan pe mehengai ho rahi hai. So even the sarkar would want to know, as sirs also very rightly said, ki price jayenge kahan pe acreages shift ho rahi hai. Sir, we are only looking back to predict future, because maize sasta hua hai to shayad maize ki acreage down jayegi, climate kharab hua hai to shayad ragi or jwar badhega. But sir, this is a dynamic signal which may not be perfect but needs a constant nurturing. But then I completely concur with sir, because there is no way. Sir, jab farm laws aaye the, it was written ki bhai sarkar intervene nahi karegi unless the prices broke a certain barrier. And within a few months of those farm laws, onions ka ban ho gaya tha export. So sir, within a week, exactly. So sir, we understand as researchers, and sirs also mentioned, we participated in a study jahan pe humne 20 saalon ke liye 17 agricultural commodities जो 70% of agriculture को cover करती है उनको पढ़ा था. यही निकला था कि ज्यादातर हमारे देश के prices on an average lower हैं than global prices, even after adjusting for quality. So there is a consumer bias, and somewhere the burden of reducing prices inevitably goes back to the farmer. But yes, there is a clear thing, and I would concur कि farmer को ज़्यादा कोई फर्क पड़ता तो है नहीं, वो participate तो करता नहीं है. But sir, we've been to the field, and I don't know more than both of you sitting here and many of you here. But farmer WhatsApp के through इन prices को circulate करते होते थे. Every morning during harvest they would circulate कि भाई आज के डेट में ये भाव चल रहा है. आज के डेट में भी ये सिस्टम खत्म नहीं हुआ है, आपने बैन कर दिया है, बट अब प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट असेसमेंट्स चल रही है, क्योंकि एवरीबडी नीड्स एक्सेस टू वेयर द फ्यूचर इज लाइकली टू बी. एंड अब वो दूसरे लोग वो चीज सर्व कर रहे हैं, वो कितना क्रेडिबल है, उसके ऊपर आप कितना भरोसा कर सकते हो, कितना महंगा है. सो समवेयर वी फील दैट even though it hasn't reached the farmer, but even if it's reaching the FPOs, it does reach the farmer who needs access to कि मैं अभी बेचूं या थोड़ा सा रुक जाऊं. And we see a lot of government programs investing in creating storages, negotiable warehouse receipts are coming up, but information है ही नहीं कि price कितना होने वाला है going forward. So we believe as researchers, this is a good sign. When both of yours said, we find it encouraging that unless depth आएगी इस market की कोई value नहीं है. But depth के लिए, we feel that there has to be consistency. But yes, bans is that low-hanging signal that gets shot every time there is a price spike. And this is something that we've at least as researchers found. But if you permit, sir, हम लोग आपसे सुनना चाहेंगे as FPOs कि क्या आप लोग NCDEX के prices को कभी देखते थे, किस तरीके से use करते थे, आप अपने farmers तक वो information लेके जाते थे या नहीं? So please. धन्यवाद.
कि आज 3-4 एक तरफ सारे लोग हैं, एक तरफ 4 लोग हैं, और तो ये एक ही रूम में बैठे हुए हैं। तो आज का विषय, हाँ जी, Just a correction, we are talking to a farmer, पर not an एक तो FPO. विषय But ये I'm था, sure he's part of an FPO also. Yes, 100%. तो एक तो ये विषय है कि जो एक तरफ सारी बातें इंग्लिश में हुई, ये मेरे हिसाब से किसानों एफपीओ के प्रतिनिधि बुलाएं तो उसमें हिंदी का यूज किया जाए, एक तो मेरा सुझाव है। दूसरा बात ये है कि और सिराज हुसैन जी और परवेज जी शर्मा जी से तो हम बहुत सारे नजदीकी रूप से और एक हम एफपीओ को पारिवारिक रूप से सहयोग प्रदान कर रहे हैं, तो सारे लोगों का धन्यवाद कि आज हमें बोलने का मौका दिया। अब आपकी बातों का और बहुत सारे लोगों की रिसर्च जो आई, अभी तीर्था चटर्जी ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और उसमें भी यही बात आई कि जो बैंड किया गलत है और उससे कोई भाव प्रभावित नहीं होते हैं, ये अपने रिपोर्ट में बताया। दूसरी बात, हुसैन जी ने कहा कि सरकार बैंड तो करती है, परंतु कर देती है, परंतु उसको चालू करना बहुत कठिन होता है। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। जब उनके हित और अहित की बात होती है, उनका हित प्रभावित होता है, तब वो तुरंत उस बात को लागू भी कर देते हैं और तुरंत बैंड भी कर देते हैं। तो ये बात 70% जो देश में किसान रह रहे हैं, और इस बात को भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना पीरियड में केवल एक प्रोग्रेस हुआ था, वो एग्रीकल्चर का था और सारे गिर गए थे। तो हम कृषि प्रधान देश में हैं और एक ही एक विकल्प था, वो भी शासन ने छुड़ा लिया। ये बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में सोना है, चांदी है, लोहा है, सारे तो बैंड नहीं किए गए और केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर धावा बोल दिया, क्योंकि उस क्षेत्र में यूनिटी नहीं है। मेन कारण तो मैं ये मानता हूँ। दूसरा कारण कि एक विचारों का एक विकल्प था, वो भी छीन लिया गया। मैंने शिवराज सिंह जी कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री जी को भी इंदौर में सोयाबीन एक एक प्रोडक्ट का एक स्टेट में उन्होंने मीटिंग आयोजित की थी। उस समय भी मैंने ये बात रखी थी कि एक किसान को एक विकल्प मौजूद था कि 4 महीने बाद क्या भाव रहेंगे, तो वो चुन सकता था कि मैं चना बोना चाहिए या सोयाबीन के पीरियड में मक्का बोना चाहिए या सोयाबीन ज्यादा बोना चाहिए। और दूसरी बात कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव है तो उससे वो अपना भाव सुरक्षित कर लेता था और उसको एक आशा थी कि मेरा 4 महीने तक मैं मेहनत करूंगा, दिन रात पसीना बहाऊंगा। जब चने के लिए ठंड में आधी रात में खेत पे जाता है, तो ये समस्याएं, वो उसका एक भाव सुरक्षित हो जाता है, यानी कि भाव का बीमा हो जाता था। अब शासन अपने तौर से तरीके से अपना तर्क देते हैं कि उससे भाव बढ़ जाएंगे। भाव बढ़ जाएंगे तो विकल्प भी तो है कि आप उसको सेल कर दीजिए, फिर परचेज कर लीजिए, तो आपने जो बेचा है उसमें घाटी न जाएगा, आप उसको खरीद लीजिए। कुछ खरीदना भी चाहिए, कुछ बेचना भी चाहिए, तो वो एक संतुलन बना जाएगा। इससे मार्केट में या पूरे देश में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये सुविधाएं थी। तो 4 महीने भाव पहले कौन सी फसल, आज प्याज की बात हो रही है, मीडिया का भी बहुत सारा योगदान रहा है कि जब किसान का प्याज 20 रुपए किलो या 30 रुपए किलो तो पूरा हाहाकार मच जाता है, परंतु जब वो गड्ढों में खाद के रोड़ी के गड्ढे में फेंकता है, तब वो मीडिया साइलेंट रहता है, चुप रहता है। तो
तो ये दुर्भाग्य है कि हम 70% हैं, परंतु हमारी आवाज को दबा जाता है। दूसरी बात कि मैं एक एनजीओ में भी, हमारे साथी लोग और हम सब काम करते थे, तो 12-13 में एक सोयाबीन की कुल खर्च खेत तैयारी करने से, बुआई करने से, फिर दवाई स्प्रे करने से, फिर काटने से, हार्वेस्टिंग करने से मंडी तक पहुंचाने का कितना खर्च आता था? तो 4,000 रुपए 3500 से लगा के 2014 में 3500 के करीब खर्च आता था 1 बीघा का, और 2019 में वो 5 से 5,500 और आज इस वर्ष में 6,000 रुपए 1 बीघा का, और भारत की औसत उपज 12 कुंटल पर हेक्टर है। तो उस किसान ने क्या कमाया? उसके लिए एक विकल्प था NCDX का, वो भी भारत सरकार ने छीन लिया। बहुत सारी मंचों से हमने FPO के माध्यम से मेल करके सेबी को भी लिखा, NCDX के प्लेटफॉर्म पर भी ये रखी बात, केंद्र सरकार को भी हमने रजिस्टर्ड डाक से ये बातें पहुंचाई, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। आप एक किसान की व्यथा को देखिए कि एक प्लेटफॉर्म केवल, और देश का 70% आबादी किसान खेती पर आधारित है, पर उसकी ओर कोई देखने वाला नहीं है। तीसरी बात, FPO का कॉन्सेप्ट भी माननीय मोदी जी ने दिया, परंतु क्या उसके लिए ऐसा धरातल बनाया कि वो FPO अपने पांव पे खड़ा रह जाए। गांव लेवल पर और एक वहां के जो तालुका लेवल पर एक दुकान की आवश्यकता होगी, या एक कार्यालय की आवश्यकता होगी, गोडाउन की आवश्यकता होगी, और वो 100 या 200 या 500 रुपए शेयर कैपिटल इकट्ठा करके FPO बनाएगा। उससे कैपिटल अमाउंट कितना होगा, और उस अमाउंट से वो क्या ट्रेडिंग का काम उन किसानों की सारी फसलें खरीद पाएगा? उसके लिए शासन ने क्या किया? उनके लिए वेयर हाउस, उस क्षेत्र में सस्ते रेट पर दुकान उपलब्ध कराने के लिए कुछ पॉलिसी बनाई। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कि दुर्भाग्य की उन बातों को अनदेखा किया गया। पॉलिसियां बनाना बहुत सरल है, परंतु धरातल पर उतारना बहुत कठिन है। तो मैं तो यही कहूंगा कि किसानों का एक विकल्प था NCDX, सोयाबीन का या चने का, वो छीन लिया गया, जिससे आज केवल 3 व्यक्ति हैं। एक मंडी में जाएगा तो वहां व्यापारी खरीदेगा, यदि कहीं प्लांट पे जाएगा तो वहाँ वो जो तेल कंपनी की जो कंपनी है, चाहे वामा हो, रुचि हो, या कोई भी हो, तो वो खरीदेंगे। अब इस जब NCDX के प्लेटफॉर्म थे तो बहुत सारे बड़े बड़े अल्फा, ITC, कारगिल, ऐसे बहुत सारे, और उसमें हमने काम भी किया था। चने का काम भी किया हमने, अवंती का आत्मनिर्भर कृषक प्रोड्यूसर कंपनी आगर मालवा, सोयाबीन का भी किया। तो एक प्रॉफिट था। तो किसानों को एक स्टेज मौजूद था, एक मंच था कि उसमें 4 महीने पहले भाव भी मालूम पड़ जाता था, और वो अपनी उपज का एक बीमा करवा लेता था नाम मात्र के प्रीमियम से। तो ये केंद्र सरकार ने छीन ली गई है, ये बड़ा दुर्भाग्य है, और सरकार को सोचना चाहिए। और मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि बैंड करना सरल है, परंतु लागू उसको बैंड हटाना भी बहुत सरल होता है, मैं तो ये मानता हूँ। धन्यवाद। आप बोलना चाहेंगे? आप में से शास्त्री साहब कुछ कहना चाहेंगे? Peter should be on. Is she? Shweta, if you can convey. Tirtha, this is Arun Raste. I'm from Hello, NCT. sir. So I just had 2 observations. One, if you're looking at yellow piece, that is the nearest which comes to
chana. Please have a look at that. And second, if you're looking at mustard oil, why don't you look at groundnut? Because both are domestic. If you combine a CPO or soybean, where most of the oil is imported, about 60% is imported, it doesn't give you a true picture. Right. So domestic to domestic, if you're looking at mustard to groundnut, will be a better comparison in terms of your academic interest. I'm just saying it is not going to help me in any way, but if you can look at that, that will be useful in academic terms. That's one. I don't want to comment on anything else. Thank you. I will do it probably two or 3 months down the line when I'm free to speak, when I'm a free citizen. Yeah. So I'll be a free citizen. Can I respond to it? Sure, we'll be happy. Yeah. Thank you for a suggestion, sir. We have included yellow peas for chana ka control and groundnut oil for mustard. For the thing is, what happens in this method, because of academic rigor required, we can't just use one. Right? So we have to sort of wait. So any one cannot be a correct absolute substitute for the for chana, any one pulse. So what we do is, that's why we have a subset of pulses, and yellow peas is included in that, and groundnut also. And we keep playing around with these controls. Kaisa to nahi ki hamara result is just because of fluke and not because of academic or empirical rigor. So that is why we have. Thank you for your suggestions. I'll just add a little to that. Yeah. We did look at a contract of sunflower oil, thinking that is something which works with soybean oil. Same way, same rates, same movements. But even that contract didn't work. So market reacts a little differently. Same thing happens to yellow pea also. We also got yellow pea contract. That could be a potentially a replacement for chana. But in market it is a replacement, but in futures market it didn't. So behaviors are a little different. So maybe I can share some data with you. Yes, sir. And basically what we were thinking while thinking of these controls was consumers should also consider this as a substitute, as closest as possible, because we know how inelastic sort of our demands are. If we need a certain kind of pulse, we will stick to that. I'll just add there, in case of yellow peas, it's a little bitter as compared to chana. So what they did was, for consumers' taste, uska besan bana ke becha. Okay. Thank you, sir. Actually, besan, chana has no substitute other than yellow peas, because no other dal can be converted to besan. So very little of chana is consumed as dal. Most of it is besan. सर येलो पी तो तुअर में भी चला गया था, स्प्लिट होके. ये बताइएगा, आपसे जरा मैं पूछना चाहूंगा कि अब तो फ्यूचर मार्केट खुलने वाला नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि खुलेगा, तो अब मध्य प्रदेश के किसान इस साल क्या सोच रहे हैं खरीफ में? सोयाबीन में जाएंगे या मक्के में जाएंगे या क्या? नमस्कार जी, मेरा पिछले साल का ये अनुभव रहा है आपका सवाल का, कि आगर जिले में जो बड़ो तहसील का जो एनालिसिस किया मैंने खुद ने, तो वहाँ का 20% से 25% जो सोयाबीन का रकबा था वो घट गया. वहाँ पे लोगों ने मक्का बोना शुरू कर दिया है. और चने वाला जो मैटर था, चने में दूसरी फसलें, औषधि फसलों की ओर लोग का जो अग्रसर हो रहे हैं धीरे धीरे करके, और किसान इससे विमुख होना चाह रहे हैं अब धीरे धीरे करके. ऐसा कुछ हमें लग रहा है, और आने वाले साल में अभी और ज्यादा होने वाला है कि कहीं लोग सोयाबीन का रकबा घटेगा. दूसरी बात ये है कि जो सोयाबीन की जगह चना में तो किसान को या मक्का में तो फायदा होता है, क्योंकि उसको जानवर के लिए कड़वी खाने को मिलेगी और मक्का बेच देगा. परंतु एक प्राकृतिक विपदा भी है, जंगली सुअर है, नील गाय है. तो ये भी एक कारण है कि वो बहुत सारा एमपी का सबसे ज्यादा सोयाबीन का रकबा होने के कारण कि वो बोए तो क्या बोए, क्योंकि यदि मक्का बोएगा, मूंगफली बोएगा, तो एक रात में सारे जंगली सुअर आएंगे, साफ कर देंगे, और नील गाय आएगी तो 4 महीने की मेहनत एक रात में समाप्त कर देगी. तो ये भी रीजन है कि वो दूसरे विकल्प तलाश रहा है, तो औषधि फसल की ओर जा रहा है. चिरायता है,
काल मेघे, इनकी ओर अब किसान बढ़ रहा है। जी सूसा सूद कुछ सर। कह रहे थे। अभी बात स्पेकुलेटर पे हुई थी, तो मैंने सोच रहा था कि अगर कोई फिजिकल मार्केट में आता है वो भी स्पेकुलेटर है, ये नहीं कि जो सिर्फ फ्यूचर्स वाला है। अगर आप घर से इंटरनेशनल सेंटर तक आए तो आप स्पेकुलेटर हो, आपने आधे घंटे का टाइम दिया तो आपने स्पेकुलेट किया कि आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। तो लाइफ में स्पेकुलेशन हर चीज में है, तो स्पेकुलेटर इज नॉट डर्टी वर्ड, और उसकी जरूरत भी है। वो लिक्विडिटी देता है मार्केट में, इन्वेस्टमेंट आता है। और हमारे देश में जो समाज की जो उसके लिए एक किस्म की वो हम उसको गलत समझते हैं कि स्पेकुलेशन बहुत ही गलत चीज है। और जैसे कि हमारे किसान भाइयों ने कहा कि और हर चीज में, अगर शेयर मार्केट में डेरिवेटिव मार्केट्स हैं और किसी को तकलीफ नहीं करती, उसमें छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं। और यहाँ पर सबसे पहला बैन जो लगता है वो कमोडिटीज मार्केट पर। व्हाट्सएप पर बहुत से ग्रुप चल रहे हैं। 2 साल पहले तूर की फसल में कमी आई थी और प्राइस बहुत बढ़ी, तो कई लोगों को नुकसान हुआ, क्योंकि वहां पर लोग अपने 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 एनालिसिस डालते हैं कि 6 महीने में ये भाव हो जाएगा, और तो कई लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो अगर कोई हेल्दी मार्केट होती, फ्यूचर मार्केट, तो वह समझ आती। और इस बार सोयाबीन में, जैसे आपने शिवराज साहब ने सवाल पूछा था, शुरुआत में अगस्त सितंबर में जब सोयाबीन कॉन्क्लेव हुई इंदौर में, तो उस टाइम पर जो भी नंबर्स उभर कर आए प्रोडक्शन के, सरकार का तो 120 125, ट्रेड का 115, और वहां बहुत लोग 95 कह रहे थे, और वो शायद सही थे। और अगर कहीं फ्यूचर्स मार्केट होती तो उनको अपना एक्सप्रेशन मिलता तो वो खरीद लेते। अगर वो सोयाबीन 4000 5000 में फ्यूचर्स दिख रहा है तो वो खरीद लेते, क्योंकि हम समझते हैं 90 है, हमने जाकर क्रॉप देखी है। बहुत से लोग जो सर्वे कर लेते हैं और देख लेते हैं, तो वो एक किस्म से किसान के लिए हेल्दी होता है, इंडस्ट्री के लिए हेल्दी होता है। और फ्यूचर्स और इसकी आप देखिए कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा फ्यूचर्स ट्रेड है एग्रीकल्चर में, एक अंदाजा है, चाइना। अब चाइना रेजिमेंटेड है, कम्युनिज्म है, डेमोक्रेसी नहीं है, जो भी है, फ्री मार्केट नहीं है, और लगभग 80% ट्रेडिंग में होती है। तो और आज तक भी बैन नहीं किया। और हम लोग सिग्नल कहाँ से ले रहे हैं? कुआलालंपुर से। हम लोग सिग्नल कहाँ से ले रहे हैं? शिकागो से। और उसमें और इतने बड़े रिस्क है, फ्रेट रिस्क है, करेंसी रिस्क है, बेसिस रिस्क है, और हम यहाँ किसान उस पर डिसीजन लेना चाह रहे हैं, उसके बेसिस पर ट्रेडर प्रोसेसर रिस्क लेना चाह रहे हैं। पतंजलि है, वो अपने भाव को स्थिर कैसे रख सकता है जब तक वो फ्यूचर में पार्टिसिपेट ना कर सकता। तो इसलिए कई पहलुओं से फ्यूचर्स की बहुत जरूरत है। और एक और हुआ था करीब 25-30 साल पहले, वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी करवाई थी, कई लोग आए थे वहां से, और हरियाणा फेडरेशन से बात की उन्होंने कि फार्मर्स को कैसे इंटीग्रेट करें। खैर बाद में एफपीओज हैं, बहुत सारे इफेक्टिव हैं, कई लोग कहते हैं कि 200-300 एफपीओ जो बहुत ही फॉरवर्ड है इस वक्त, तो वो एक व्हीकल मिल गया उनको आगे आने का। शिवराज साहब, आपने कहा था सरकार अपनी स्टडी करवा ले, वो प्रोफेसर अभिजीत सेन के चेयरमैनशिप में हुई भी थी 2008-9 के आसपास। 2 प्रोफेसर थे उसमें आईएम्स के, और उनका कंक्लूजन भी यही था, और श्वेता की रिपोर्ट में वो है भी कोटेड आल्सो। मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में ही था, उन्होंने बहुत साफ वाजे कंक्लूजन नहीं दिया उसमें। उन्होंने जाहिर है कि वो उन्होंने भी वो किया, और वो रिपोर्ट भी बड़ी मुश्किल से दी उन्होंने। हमारे मिनिस्टर शरद पवार थे, तो कई बार उनको फोन किया गया, 1-2 बार मैंने भी किया। बहरहाल नहीं साहब, ये बताइए कि अगर जो ये चल रहा होता फ्यूचर्स मार्केट, तो क्या पिछले साल अक्टूबर में वो बता सकता था कि अब 8,000 हो जाएगा सोयाबीन?
सितंबर में तो नहीं बता सकता, 4 महीने कॉन्ट्रैक्ट जनवरी तक अगर किसी के पास रखा हो तो बता सकता था, लेकिन जनवरी तक किसान को रख नहीं सकता। 4-8 महीने पूर्व की जानकारी तो उस बात से आभास होते जाती, 4 महीने बाद पहले दूसरे तीसरे 4 महीने तक का भाव दर्शाता है, तो चौथे महीने हर महीने बढ़ते क्रम में भाव दिखा रहा है, यानी कि ये बात साबित होता है कि भाव बढ़ना है, ये सीधी सी बात है। लेकिन आपको याद होगा 2022 में जब समृद्धि भी एक बहुत बड़ा पोजीशन आप लोगों से ही लेके हमने ये काम किया है, agri startup which I had promoted. So we were holding about 150 crores worth of soybean future positions on NCDX. We were one of the biggest at that time. We were only number 2 after ITC. And we lost 15 crores that year. Because जो जनवरी तक का सिग्नल था, हम भी उसी में चल रहे हैं. And then it reversed against an 8-year trend when the futures prices were rising in March, April, May, they went down. And we liquidated in June with a 15 crore loss. It's another matter that the board was very supportive and we got away with it. But it's not that it is only a one-way. तो खैर उसको छोड़ दें. मैं सिर्फ वापस अपना अंत में आपकी परमिशन से उसी अपने स्टक ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह बोलूंगा कि हम समझ लें कि अगर हम चाइना का एग्जांपल दे रहे हैं, वहां पर नेशनल लेवल पे प्राइस सप्रेशन की एक पॉलिसी नहीं है, वहां रूरल कमर्शियल कैपिटल इंटरेस्ट नहीं है. हमारे वहां हमने ये तय किया है कि जो लोकल वो फोर्सेस हैं जो लोकल पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं, जिनको लोकल पॉलिटिकल पेट्रेज मिलता है पंचायत से लेके स्टेट पॉलिटिक्स तक, वो ये चाहते हैं कि ये फार्मर्स लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे अपना प्राइमरी प्रोड्यूस ट्रांसफर कर दे. द प्राइस बिल्डअप दैट हैपेंस लेटर दैट बेनिफिट्स अदर पीपल. फ्यूचर्स ट्रेडिंग was a way to help these primary producers, and that, as I said, does not fit into the larger political economy model, so it will not be allowed to revive and be an effective instrument. This is my thesis, but बात है. लेकिन सर, हाँ जी, आप फरमाइए. I have a very simple thing on. You have an extremely controlled commodity called sugar. 2 months ago, government thought there was a lot of sugar and asked that 500,000 tons more be exported, and 2 months later they ban exports. So, I mean, even on a fully controlled commodity, government has no idea what's happening on the ground. So why does the government want to get involved? Why don't they just let it be open and let everybody, just do it? I mean, this is my point, that this is a very clear example, and we have become a laughing stock in the world market. We've become, nobody wants to trade sugar out of India anymore. You wait and see the next 2 years when we'll have a bumper crop or when we want to export, we'll get $20, $30, $40 discount to the world market because we just don't have credibility left. So it's not only the farmer, you are making a mockery of India as a name. That's the problem. It's also so cruel on the exporter. Oh, totally cruel. About 2 lakh tons of sugar is in transit. It has to go back to market. करा लेंगे साहब. अरे नहीं, I mean, you go to court. I mean, people are going to court. Do you want every time you have a ban to go to court to get things done? नहीं, वो सरकार से भी हो जाएगा. नहीं सर, हो रहा है सर. नहीं हो जाएगा. सुनिए, एक बात सुनिए, उसमें ये तो खैर आपकी बात सही है, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये है, रोजाना अखबारों में निकलता है जी एग्रीटेक ने इतने 1000 करोड़ रुपए रेस कर लिए, एग्रीटेक ये कर देगा, वो ये बता देगा कौन सी बीमारी आने वाली है वगैरह वगैरह. आप देखते होंगे. अरे एग्रीटेक तो यही नहीं बता पा रहा है कि शुगर केन का प्रोडक्शन कितना होगा. इसमें देखिए, इस केस में खाली गवर्नमेंट को नहीं कह सकते आप, क्योंकि इसमें शुगर मिल भी इन्वॉल्व है एग्रीटेक के साथ. वो भी कोशिश करते हैं कि ये मालूम कर सके, प्रेडिक्ट कर सके कितना प्रोडक्शन होगा, लेकिन एग्रीटेक नहीं बता पा रहा है. लेकिन यहाँ तो पूरा एग्री स्टैक बन रहा है, ये बन रहा है, ऐसा लगता है कि सब कुछ उसी से होगा, सब कुछ सैटेलाइट से बता देंगे, सारे क्लेम सेटल कर देंगे. खैर ये तो बात हुई. आखिर में एक सवाल मेरा और है साहब, सूद साहब बताएंगे, ये जो फ्यूचर मार्केट है ये तो पेट्रोल का ही प्राइस नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहा है. ये कह रहा है $105 है,
फ्यूचर प्राइस और स्पॉट में चल रहा है 140। वो सर वो भी सही है, और उसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि स्पॉट में लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है, माल मूव नहीं कर सकता, प्रोडक्शन इम्पेयर्ड भी है, और फ्यूचर्स में मार्केट कह रही है कि शायद नॉर्मल हो जाए। तो जब मार्केट इस तरह बैकवर्डेशन में, इन्वर्स में होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि अभी स्टॉक कम है, बाद में आ जाएंगे। तो ये नहीं कि मार्केट ठीक प्रोडिक्ट नहीं कर रहा, मार्केट सही प्रोडिक्ट कर रहा है। और कई बार ये मार्केट जब कॉन्टेगो में होगी तो ये दिखाती है कि बाद में शॉर्टेज आने वाली है, अब बहुत है। अगर मान लीजिए बहुत रेडी स्टॉक्स हो जी, नहीं मार्केट में देखिए मिलियंस, मार्केट में मिलियंस लोग काम कर रहे हैं एक साथ, पर्टिकुलरली क्रूड मार्केट में, और उसमें बहुत बड़े बड़े फंड्स लगे हुए हैं। तो वो कलेक्टिव नॉलेज, कलेक्टिव की विजडम है, मतलब किसी एक आदमी का एनालिसिस नहीं है। आज का प्रॉब्लम क्या है कि हमारे फार्मर्स को, ट्रेडर्स को, कंज्यूमर्स को किसी एक एनालिस्ट पर डिपेंड करना पड़ रहा है, जो कह रहा है कि तूर की प्राइस अगले 6 महीने में इतनी हो जाएगी, 200 रुपए किलो, नहीं हुई। तो वो कोई मार्केट होती, उसमें कलेक्टिव लाखों लोग लगे हुए हैं, तो शायद ठीक अंदाजा होता। और कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे प्लीज। अभी साहब बता रहे थे कि किस तरह हम लोग डिपेंड करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के बेंचमार्क पे। when you are trading in India particularly, चाहे एडिबल ऑयल्स हो, चाहे फूड ग्रेन्स हो, व्हीट हो, whatever, तो आप देखते हैं कि KLC में क्या हो रहा है, CBOT में क्या हो रहा है। सो एक बेंचमार्क वहाँ है, उससे आप अपनी प्राइसेस को, इफ यू आर इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर, अपने एक्शन को करते हैं। उसी तरह यहाँ जो फूड कंपनीज हैं या प्रोसेसर्स हैं, they have also, they are buying the agriculture products, the raw material which goes into the end product, and they have to keep the prices of the end product MRP के हिसाब से वो फिक्स करते हैं जो इनपुट के कॉस्ट है। यदि इनपुट की कॉस्ट बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी रोज के रोज, they cannot do it. So for them also the price discovery becomes very important. और उसके लिए वो क्या करते हैं, वो बेसिकली डिपेंड करते हैं जो ओपन मार्केट में जो न्यूज़ अवेलेबल, जो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ट्रेडर्स हैं जो प्रोक्योर करते हैं मंडियों में, उनसे प्राइस लेते हैं। एक किसानों के लिए हम लोग एक ऐप चलाते हैं, फसल सलाह नाम है उसका। उसमें बेसिकली हम लोग वेदर एडवाइजरी देते हैं और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसमें हमने एक आइटम ऐड किया, प्राइस, कि आपकी प्राइस क्या चल रही है विभिन्न मंडियों में। वो बिकेम सडनली ये रोअरिंग सक्सेस। अब ज्यादा हमारा फोकस उसी के ऊपर हो गया। अब ज्यादा किसान पूछते हैं कि भाई आप बोलते हैं ड्राउट होगा तो मैं सोयाबीन लगाऊं कि मक्का लगाऊं कि वो कौन सी वैरायटी लगाऊं, कहाँ मिलेगा, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, क्या प्राइस रहेगा। तो ऐसा नहीं, फार्मर भी दे आर वेरी मच अवेयर, दे आर वेरी स्मार्ट सर। हमारा इंटरेक्शन उनसे डायरेक्टली होता है बिकॉज ऑफ द ऐप। सो दे आस्क वेरी सर्चिंग क्वेश्चंस, व्हाट्स गोइंग टू हैपन। और जो MRP, सॉरी जो MSP है, उसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता है मेरे ख्याल से। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। So what I wanted to conclude is that you have to have some kind of a independent price discovery system through which the farmers as well as the food processors or the food factories can determine the prices. I'll just add to that. एक लाइटर नोट पर बात कहता हूँ कि किसी को बुखार चढ़ गया, उसने कहा थर्मामीटर तोड़ दो। Futures market is like good evening. This is Afra Abubakar from Informist Media. I just want to understand. So, okay, in 2021, the ban was imposed, and we saw the ban getting extended year after year. So, was there not any evidence from the government if
I mean, was there any study conducted from the government side if there is any correlation between prices, futures prices, and inflation? I see individual bodies, like last year, NCDX had conducted a study from IIT Bombay and Birla Institute, and this time Arcus Policy has conducted a study. And both of them are finding the same results, that there is no relation as such that it is futures market is driving inflation. But how is the government responding to these studies? And there should be some kind, even the presentation today mentioned that this is a received logic, that inflation, futures market is driving the inflation. But what is the government, I mean, how is the extension happening year after year without providing any logic? फिर मैं ही आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट के पास स्टडी कोई ना कोई जरूर होगी। उनके पास तो आईबी है, उनके पास एनआईए है, उनके पास नीति आयोग है, तो कोई ना कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उनके पास होगा, और वो हम कह सकते हैं कि हमसे बेहतर ही होगा शायद, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं है कि कोई ऐसी स्टडी गवर्नमेंट ने करवाई हो जिससे ये मालूम हो कि इन्फ्लेशन इस वजह से हो रहा है। अब इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। काफी कोशिशें लोग करते रहते हैं, फार्मर्स काफी एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करते हैं, लेकिन शायद एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी अपने को मजबूर पाते हैं, तो इसको यहीं छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो देखिए, बहुत जो ये 48 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि पता नहीं कितने 15 मिलियन या कितने पेड़ कट गए पिछले कुछ सालों में। तो ये कोशिश आप श्वेता कर रही हैं, प्रवेश शर्मा साहब को प्रेजेंट कर रही हैं कि एक पेड़ इनके नाम में लगाया जाए। आपके नाम में पेड़ लगाया। ओके तीर्था, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much. Thank you for coming. Goodbye. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much. Excellent. Excellent.